Okay, let's start revision of essay 230 audit documentation. So in this essay, what we have to cover? Nature, objective and purpose, and the requirements of the essay. So in nature objective, we have to gather the evidence, and audit documentation cover additional purposes also. Like what evidence means achievement of the overall objective has been done. An audit is planned and performed as per essay, and the requirement has been as per legal and regulations or not. And additional purposes, it assists the engagement team to plan and perform the audit in the proper way, and members for the engagement team responsible for the supervision. कि engagement team का जो partner है, engagement team partner है, engagement team है, उनको responsible बना देगा उनके काम के लिए. And it enables for the purpose of quality control review, external inspection, engagement to be accountable for its work. कि जो उनका quality control अगर review होता है QC review firm का या उसका उनके works का, तो that will be, it will enable, audit documentation will enable that part very easily. External inspection can be done easily if there is any peer review, or engagement team will be accountable for work, and retaining record for significant matters that we have to. And now requirements, timely preparation of audit documentation should be done, that is in 60 days from the audit date of audit report, and documentation of audit procedures and audit evidence obtained from form, context and extent of audit documentation, and that's sufficient to enable the experienced auditor having no previous connection to understood NTF audit perform, result of audit procedures and conclusion, and significant matters arising in final conclusion. Means audit documentation ये purpose है कि अगर कोई पर्सन जो इनएक्सपीरियंस है या उसका एक जो एक्सपीरियंस ऑडिटर है, मींस उसको पता है कैसे ऑडिट करते हैं, एंड हैविंग नो प्रीवियस कनेक्शन टू अंडरस्टैंड, उसका मतलब जो उसने ऑडिट किया है वो पहली बार कर रहा है, लेकिन पहले से कोई और टाइप के ऑडिट कर चुका है, मींस है उसको ऑडिट का एक्सपीरियंस, बट जो करंट मींस असाइनमेंट है उसका नॉलेज नहीं है वहां पे, तो उसके आ जाएगा एनटी, उसको समझ आ जाए डॉक्यूमेंटेशन से, रिजल्ट समझ आ जाए और सिग्निफिकेंट मैटर्स पता चल जाए. एंड इन एनटी नाउ वी विल कवर इन फर्दर स्लाइड्स आल्सो, लाइक. And next, departure, if there is any departure from relevant requirement, so whether the alternative procedures performed, aim achieved should have been done or not, and reasons for such departure, that should be documented. And matters arising after date of audit report, we have to document that circumstances that have been encountered due to which after the date of audit report something has been changed, and when and reviewed by who has reviewed that part, and new procedures performed to gather the evidence, and who has gathered that, we have to check that. And final audit file, we not have to delete and discard before end of the retention period, that is 7 years from date of audit report or group audit report, whichever is later. And assembly of audit file should be done in 60 days from the date of audit report, we have covered. Now moving to the note that have made from essay 230 bare text. So now, nature and scope of audit documentation that meets the requirement of the essay, means auditor basis of conclusion and planning and performing in accordance with the essay that have been done or not. So nature and scope of this essay is basis of conclusion and planning and performing in accordance with the essay. And audit documentation serves number of additional purposes, like assisting engagement team to be plan and perform the audit, कि उनको अचीव करते हैं ना, असिस्ट करते हैं कि एंगेजमेंट टीम को कैसे प्लान और परफॉर्म करना है, ऑडिट को कैसे अपने फाइल्स को अरेंज करना है. एंड इट असिस्ट द assisting the responsible for the supervision of direct and supervise the audit work and discharge review responsibility, कि कौन रिव्यू करेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी में उस जो हम डॉक्यूमेंटेशन करेंगे, जो अपनी वर्किंग बनाई है उसकी दम लिख देंगे ना, who is the person responsible and when this file have been done finalized, so that we have to mention in that file. And audit documentation enables the engagement team to be accountable for the work. It enables the team accountable for work and conducting of quality control review and inspections. जो किसी फर्म का क्वालिटी QC रिव्यू हो रहा है या इंस्पेक्शन हो रहा है, that will help in enable the conduct of in the easy way, and conducting of external inspection if there is any, and retaining record of matters of continuing significance to future audit. या अगर हम उनकी डॉक्यूमेंटेशन करें वो कंटेंट सिग्निफिकेंस कैरी करता है फ्यूचर ऑडिट के लिए भी. जैसे अगर कोई हम एग्रीमेंट ऑब्टेन करें जो मल्टीपल पीरियड्स के लिए, उसको हम रिकॉर्ड करके रखेंगे एज अ रिटेन करके रखेंगे एज अ रिकॉर्ड, that will help in future audits. Now, there is timely preparation of audit documentation should be done, so that to enhance the quality of the audit and facilitates effective review and evaluation of the audit documentation. कि क्वालिटी इंक्रीज हो जाती है ना अगर हमने टाइमली प्रिपेयर करे डॉक्यूमेंटेशन को. इससे क्या होता है, रिव्यू और इवैल्यूएशन जो ऑडिट एविडेंस हमने गैदर किया उससे इजी हो जाता है, इफेक्टिवली हो सकता है. एंड डॉक्यूमेंटेशन आफ्टर ऑडिट वर्क परफॉर्म्ड लाइकली टू बी लेस एक्यूरेट, कि अगर जो भी हम डॉक्यूमेंटेशन करेंगे आफ्टर ऑडिट वर्क हैज बीन डन, दैट विल बी लेस एक्यूरेट, क्योंकि हमने जो काम करना था वो तो पहले कर लिया, और क्योंकि हम आगे चेंज करे होंगे ना उसके अंदर या पहले नहीं किया, तो दैट इज शोइंग द लैकनेस एंड दैट कैन बी लेस एक्यूरेट. लेस एक्यूरेट है मतलब पूरे नहीं लेकिन कम होंगे वहां पे. नाउ
form context and extent of audit documentation. हमने किस extent तक करना है, कहाँ तक करना है और कैसे करना है. मतलब इसको ऐसे करना है means documentation should be done that should suffice to be enable an experienced auditor having no previous connection to understand. कि उसे मतलब वही था कि उस experienced auditor and no previous connection to understand. Entry of audit procedures performed, result of audit procedures performed, and significant matters that have been arising. And document, auditor should document and shall record identifying the characteristics of specific items and matter tested. कि जो ऑडिटर ने जो करंट ईयर ऑडिट किया, किसी भी ऑडिट के अंदर जो स्पेसिफिक आइटम्स की मैटर को टेस्ट किया होगा वो कैसे किया, दैट शुड बी डॉक्यूमेंटेड. दैट विल एनेबल द एंगेजमेंट टीम अकाउंटेबल फॉर सच वर्क, कि किसने किया, दैट वी विल मेंशन दैट इन द दैट फाइल हु हैज डन दैट पार्ट. And it will facilitate the investigation of inconsistency. Like if there is any inconsistency, it will be properly investigated who has done that part and what has been done wrong in that case, and who performed audit work and date such work have been was completed. कि किसने काम किया, कब उस किस डेट को कंप्लीट हुआ, that should also be documented. And who reviewed audit work performed, किसने रिव्यू किया वहां पे, कोई सीनियर मैनेजर था, किस पर्सन ने रिव्यू किया और किस एक्सटेंट तक रिव्यू था वहां पे. बट इसका ये मतलब नहीं है, doesn't imply need for each specifying work paper to include evidence of review. कि हम हर एविडेंस में लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, हम एक में लिख सकते हैं कि इस पार्टनर ने ये किया, किस एक्सटेंट तक किया काम, या किस मैनेजर ने किया किस एक्सटेंट तक काम. So now procedures requiring inquiries. If there is any audit procedure requiring inquiries, so in that case we have to record the date of inquiry and job design, what's the for what purpose inquiry has been done, and the name of such person from whom inquiry has been done. And if there is any observation procedure, audit procedures, in that case we have to record the process matter that have been observed, individual or responses, and when and where such observation has been done. कि हमने कहाँ किया, उस कैसे जो process था उसको कैसे observe किया वहाँ पे, that should also be documented. And documentation is not limited to the records. मीन्स डॉक्यूमेंटेशन का ये रिकॉर्ड नहीं, मतलब ये नहीं है कि जो ऑडिटर ने प्रिपेयर किया अपनी ऑडिट करते वक्त ड्यूरिंग द कंडक्टिंग ऑफ द ऑडिट, दैट विल नॉट लिमिटेड टू सच रिकॉर्ड्स. एंड इन दैट इंक्लूड आल्सो मिनट्स ऑफ द मीटिंग्स जो हम क्लाइंट्स ऑब्टेन करेंगे, दैट इज आल्सो डॉक्यूमेंटेशन. ये डॉक्यूमेंटेशन ये नहीं कि जो हम ऑडिट अपने वर्किंग्स बना रहे हैं, दैट इज द डॉक्यूमेंटेशन. नॉट अदर कैन आल्सो बी दैट. Now auditor identify information that is inconsistent with the auditor final conclusion. कि जो ऑडिटर ने इंफॉर्मेशन ऑब्टेन की और फाइनल conclusion जो reach हुआ regarding the significant matter, he shall document how alternative procedures perform and that achievement of the aim of requirement or how he addressed the consistency. So all three matters should have been clearly mentioned, that how he has performed the alternate procedures and whether he has achieved the aim requirement or not, and how he addressed the inconsistency. And ये हमने तीन चीजें ऑडिटर को डॉक्यूमेंट करनी है if there is any inconsistency with the final conclusion. And this doesn't imply that auditor needs to retain documentation in incorrect or superseded. कि ये मतलब नहीं है उन डॉक्यूमेंट्स को भी रिकॉर्ड करे जो इनकरेक्ट गलत थे, या किसी को मींस हमने कोई ऐसी वर्किंग की जो पुरानी वाली से चेंज होगी, so that should also be deleted or like that in that case. Now exceptional circumstances, auditor judges to depart from relevant requirement in essays. अगर ऑडिटर कोई ऐसे की रिक्वायरमेंट से बाहर जा रहा है, मतलब रिक्वायरमेंट से डिपार्टिंग फ्रॉम दैट पर्टिकुलर ऐसे, he shall document how additional audit procedures or like to achieve the aim of requirement has been done. And documentation requirement applies only to such, means only to such उन्हीं पे अप्लाई होगी which are relevant. means audit documentation is not relevant in only in cases, कब relevant नहीं होगी, when entire essay is not relevant, like in case essay 610 internal audit function is not applicable to the entity. In that case using the work of internal auditor will not be relevant. And next circumstance requirement is conditional and that condition doesn't exist. ये जो condition थी वो exist नहीं कर रही, like requirement to modify inability to obtain SAE, there is no such inability. अगर कोई requirement थी inability हमने SAE को अगर थी वहाँ पे, मीन कि अगर हमने SAE को अगर obtain नहीं किया तो वहाँ पे हमें modification करनी पड़ेगी. बट अगर कोई इनएबिलिटी है ही नहीं, हम ऑब्टेन कर रहे हैं एविडेंस, तो हमने उसकी मेंशन करने की रिक्वायरमेंट क्या है वहाँ पे, दैट्स द मेन पार्ट. नाउ इन एक्सेप्शन सर्कमस्टांसेस ऑडिटर परफॉर्म न्यू एंड एडिशनल प्रोसीजर्स एंड ड्राइंग न्यू कंक्लूजन, या तो न्यू प्रोसीजर्स या एडिशनल परफॉर्म कर रहा है एंड ड्राइंग न्यू कंक्लूजन आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट. ये ऑडिट रिपोर्ट होगी थी, आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट ही शैल डॉक्यूमेंट, उसे क्या डॉक्यूमेंट करना है वहाँ पे, सर्कमस्टांसेस दैट हैव बीन एनकाउंटर्ड, कि इसने जो सर्कमस्टांसेस उसने एनकाउंटर किया ड्यू टू सच न्यू कंक्लूजन ऑन एडिशनल प्रोसीजर्स हैव बीन परफॉर्मिंग, और लाइक व्हाट्स न्यू एडिशनल प्रोसीजर्स दैट हैव बीन परफॉर्म,
how audit evidence has been obtained, and conclusion that has an effect on audit report. उसका conclusion क्या है audit report पे, क्योंकि हमने न्यू सर्कमस्टांस एनकाउंटर किया, एक तो उसको एक्सेप्ट कर देंगे, क्योंकि देखो ये होना एक्सेप्शन सर्कमस्टांसेस में, उस केस में क्या करना है, जो सर्कमस्टांस एनकाउंटर हुआ उसको डॉक्यूमेंट करो, क्या था न्यू, जो उसने एडिशनल प्रोसीजर्स परफॉर्म किए उसको डॉक्यूमेंट करो, ऑडिट एविडेंस उसने क्या ऑब्टेन किया इन दैट केस, that should also documented, and what the conclusion and that have effect on the audit report, that should also be documented, and when and by whom resulting changes to audit documentation made and reviewed, किसने बनाए और किसने रिव्यू किए, that should also be documented. Now what are the exceptional circumstances now that have the facts which become known to the audit after the audit report but existed at that date, if known at that date, might have caused the financial statement to amend or auditor to modify the opinion. कि एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस क्या है, यहाँ पे कोई ऐसा फैक्ट था जो ऑडिटर को अपनी ऑडिट रिपोर्ट इशू करने के बाद पता चला, बट दैट सच फैक्ट हैज बीन एग्जिस्टेड ऑन दैट डेट आल्सो, कि जब हम ऑडिट रिपोर्ट इशू कर रहे थे दैट फैक्ट वाज इन एग्जिस्टेंस, एंड दैट माइट हैव कॉज्ड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू बी अमेंडेड, कि फाइनेंशियल्स को अमेंड करना पड़ेगा, और द ऑडिटर टू मॉडिफाई द ओपिनियन, अगर ऑडिटर को मॉडिफाई भी करनी है, and resulting changes to audit documentation reviewed in accordance with review responsibility in SA 220 with the engagement partner taking final responsibility. अगर कोई ऐसा चेंज हो रहा है तो एंगेजमेंट पार्टनर की रिस्पांसिबिलिटी होती है उसको प्रॉपर्ली रिव्यू करे, बिकॉज नाउ ऑडिट in that case audit report can be now changed and conclusion on that part. So now last, assembly of audit file. SQC1 requires the firm to establish a policy and procedure for timely completion of audit file. SQC requirement कहता है SQC1 की फर्म को कहता है कि फर्म को ऐसी पॉलिसी और प्रोसीजर्स बनाने जिससे टाइमली कंप्लीशन, ऑडिट फाइल का टाइमली कंप्लीशन हो जाए, एंड सच टाइम लिमिट इज नॉट मोर देन 60 days आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, कि ऑडिट रिपोर्ट जब इशू होगी नॉट मोर देन, इट शुड बी विद इन 60 days फ्रॉम द ऑडिट रिपोर्ट, एंड कंप्लीशन ऑफ ऑडिट फाइल आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट इज एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस, कि अगर हम कंप्लीशन करें ऑडिट फाइल का आफ्टर डेट ऑफ ऑडिट, एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस है वहाँ पे, and doesn't involve performance of new procedures or drawing new conclusion, कि हम खाली अरेंजिंग करें, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस है वो, खाली कि एडमिन पर्पस के लिए हम कर रहे हैं उसको अरेंज वहाँ पे, and changes however be made to audit documentation during final assembly file process if they are administrative in nature, क्योंकि अगर हम अरेंजिंग करें, कोई डिलीट करें, सुपरसीडेड मींस कोई फाइनल असेंबली एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क कर रहे हैं, कोई अदर देन दैट वी आर नॉट डूइंग, एंड व्हाट आर द administrative tasks that we can do, like deleting or discarding the superseded documentation, कि जो ऐसा कोई डॉक्यूमेंट था जो हमने फाइल आगे चेंज कर दी, that should be superseded and we should delete that file, and documentation of audit evidence that has been obtained, discussed and agreed with the relevant members of engagement team before date of audit report, कि जो हमने audit evidence obtain की है, discuss की है, agree on की है with the relevant members, that should also be documented, or means in the case of we can change that in administrative tasks. Sorting and collating and cross referencing of working papers, कि हम sort करें डाटा को, कोलेट करें, एक जगह कंपाइल कर रहे हैं अगर कोई डाटा मिसमैच था, and we are giving cross referencing to the working papers. Next, signing off on completion checklist relating to final assembly process. Final जब हम final assembly कर रहे होते हैं, एक हमने checklist भी बनानी होती है कि हमने ये चीज कर ली, ये arrange कर ली, ये इसका reference हमें देना होता है. So that in that case, now SQC1 required that retention period should not be shorter than the 7 years from the date of audit report, or if later date of group audit report, means from date of audit report or group audit report, whichever is later in that case. Now example, necessary to modify existing audit documentation and additional new audit documentation after final assembly completed, need to be clarified the existing audit documentation arising from comments received during monitoring inspection. अगर inspection चल रही थी वहाँ पे दिख गया कि ये पूरी नहीं थी यहाँ पे, so in that case we have to modify the existing audit documentation. That should be done by internal or by external parties, means अगर कोई रिव्यू चला था थर्ड पार्टी का वहाँ पे, तो या कोई हमारी कोई थर्ड पार्टी भी कई बार आती है फर्म में रिव्यू करने के लिए, हाँ ये आपने काम डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर्ली किया है कि नहीं है, other than peer review or quality control, I'm saying that external parties may come in that case, or internal you can say, to review the or monitor the properly that audit documentation has been done properly or not, and ownership of all documentation lies with the auditor, that we know that. Now this is the whole summary of audit documentation with detail. Now audit documentation, what is records of audit procedure performed, audit evidence obtained and conclusion read, and also got working papers and work papers, and nature, audit conclusion and performing with SA and regulation, purpose of audit, planning require enable जो हमने किए थे, factor affecting. Now this is we have not done in
earlier in that case. Factors impacting the form, content and extent of audit documentation. Size and complexity of entity, कि उनका size क्या है, complexity क्या है. Identify risk of material misstatement. Nature of audit procedures. Significance of audit evidence obtained. Audit methodology and tools, कि क्या method उन्होंने follow किया, क्या tools अगर कोई follow किए. Nature of exceptions if identified. And the short form of like you can say in this is CAREST. Complexity, audit, nature of audit procedures, risk of material misstatement, exceptions, as significance of audit evidence, and T means or tools, you can say audit tools that have been followed by that particular entity. And advantage is helpful in review and inspection, assist auditor to support justifying his conclusions, helps auditor to judge whether overall objective has been achieved or not. Now, audit file that has been should be in folder, storage, media, or physical e-form can be done, and containing records of audit documentation for specific assignment engagement if there is any. Assembly of audit file should be done within 60 days of audit report or group audit report, whichever is later, and we should retain such audit documentation not shorter than 7 years of that part. And changes in audit documentation during the final assembly process does not involve drawing new conclusion and performing new procedures, and it involves only administrative changes that are for deleting, sorting, signing, and documenting conclusions, and documentation of significant matter and related matters. Judgment depend on the judgment and objective analysis of that particular facts. Example matters that are significant, auditor difficulty in applying audit procedures, result of audit procedures, he can obtain that. The examples क्या है वहाँ पे, documenting of significant matters, and completion memorandum, that is summary of audit significant matters identified during audit and how they have been addressed. Means audit documentation summary is there in completion memorandum, कि हमने कैसे किए उसको कैसे address किया वहाँ पे. And ownership is without property, that is as per SQC1 audit documentation is property of the auditor, and he may make extracts available to the clients. Auditor की मर्जी है वो clients को available करे ना करे, and he should care that doesn't undermine the validity of work performed and independence of the auditor, कि उसके वर्क पे इम्पैक्ट ना आए और उसकी इंडिपेंडेंस पे इफेक्ट ना आए. So this audit documentation division has been done. Next.